नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अर्शद चौधरी। आप देख रहे हैं CN TV कलर्स ऑफ नॉर्वे। कलर्स ऑफ नॉर्वे, इसके पीछे पस मंजर ये है, मैं ये पहले बता दूं, तमाम नॉर्वे में जो कम्युनिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ ये कलर्स हैं नॉर्वे के, एक बन के पूरे फूल बनता है और पूरी पत्तियाँ हैं, सारे मोस्टली फ्लावर्स हैं, और इनका नाम है कलर्स ऑफ नॉर्वे। हम सब कलर्स हैं और नॉर्वे के मजमुआ बन जाते हैं, फिर नॉर्वे बनता है। तो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ ताकि कोई इसमें सब फर्क ना समझे, हम सब कलर्स ऑफ नॉर्वे हैं। तो कलर्स ऑफ नॉर्वे हर कम्युनिटी की खबर देता है। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 9 नवंबर के हवाले से बात करूंगा। आज की रिपोर्ट आपको ये दिखाई जाएगी, क्योंकि 9 नवंबर को पाकिस्तान के कौमी शायर, आम शायर नहीं, कौमी शायर, नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल की यौम विलादत के सिलसिले में तकरीब हुई पाकिस्तान में 9 नवंबर को। तो ज़ाहिर गैर सरकारी और सरकारी सतह पर सेमिनार होती हैं, बाकायदा तासीर होती है। और नॉर्वे के में पाकिस्तान सफारतखाना ने पहली दफ़ा अल्लामा इकबाल के सिलसिले में यौम इकबाल तकरीब मुनक़्क़िद की, बज़्म इकबाल सारी, और इस फेर मुज़लमान इसका नाम रखा था बज़्म इकबाल। इस फेर मुज़लमान के बारे में बताता चलूँ कि ये वाकई ये अदबी शख्सियत है। और फिर तकरीब में उन्होंने कहा भी था, बचपन की बात सुनाई कि वो हमारे साहबकारी से पान के ज़रा किताब मिली, तो उसमें से उन्हें फिर एक आइडिया मिला, एक मतलब मोटिवेशन मिली। तो उनके हस्बैंड जो हैं शाहनवाज तारड़ साहब, वो भी एक हिस्टोरियन है, और उनको मेरा ख्याल में वो भी किताब जल्दी लिख पाएंगे, बहुत कम गो हैं, शेफ नफ्स इंसान है, बड़ी प्यारी शख्सियत है। और मेरा ख्याल है वो चंद माह में उनकी किताब मंजर आप आ जाएगी, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि अंदाज बताता है किताब लिखने के मूड में है। उनको लिखने भी चाहिए, क्यों उनमें टैलेंट पाया जाता है। मैंने वो स्मेल महसूस की है शाहनवाज तारड़ साहब, आप में वो मुझे महक मिली है जो आप में महक है। तो आप किताब लिख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद किताब लिख चुका हूँ, मुझे अंदाजा है कि किताब कौन बता लिख सकता है, आप हैं, लिख सकते हैं। अच्छा चलिए हम पढ़ते हैं अपनी किताब की जान, आप सारी अपने इस तकरीब की जानब, क्योंकि तकरीब बड़ी शानदार थी और मैं इसको वैसे भी चला सकता था, हैज इट देता और आने कर देता, मज़ा नहीं आता। कोई जिस तकरीब की शान थी उसी तरीके से मुझे इसकी रिपोर्ट कवरेज करनी चाहिए थी, तो मैं उसकी कवरेज कर रहा हूँ। अब देखिए, इसको उर्दू तर्जमा मुश्किल होता है, ये एक आदमी का काम नहीं है, और इसमें बड़े 2-3 अफराद चाहिए होती हैं। लेकिन अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐ मेरे प्यारे खुदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं हम वक्त काम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ आपकी खिदमत के लिए। देखिए रेडियो से चल रहा है, मेरा रोजी के साथ चल रहा है, लेकिन ये शौक है मुझे, जो मेरा पेशा है, ये प्रोफेशन है, मैं खिदमत कर रहा हूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कौम की, ताकि वतन की। तो ये इससे मेरे शोबे से, मेरे इक़दाम से कई फायदे हो रहे हैं। एक बात फ़ायदे ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन आफ्टर हार उसका पता चलता है वो कि इसके स्टेप से क्या, कहाँ पर उसका फ़ायदा पहुँचा। तो इसलिए आप आगे से बड़ा किया करें ना। रेडियो शो है, CN TV है, एक आदमी काम कर रहा है, 1 मैन शो है, और इतनी मेहनत कर रहा है, उसको एनकरेज करना चाहिए, उससे ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। है ज़रूरी बात आ कि हाँ यहाँ बात करते करते एक ना बात अपनी भी कर दूँ। जो मेरे बहन भाई सब देखें TV चैनल, इस वीडियो को देखें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से समझिए कि आपने अपने आप को महफूज किया, समझिए कि आपने अपना हिस्सा कलर जो है अपना, अपनी महक का इसमें डाल दिया कि आप भी नॉर्वे में कलर्स ऑफ नॉर्वे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप फरादरी का मुजाहरा करते हुए सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। आपका इस मामले में एडवांस शुक्रिया, बहन भाई शुक्रिया। मैं कर रहा हूँ जो लोग मुझे कर रहे हैं, बल्कि मैं उनका नाम भी लेता हूँ। और देखिए मेरा मीडिया हाउस, पहला मीडिया हाउस है, अगर आप स्पॉन्सर करें, मुझे इश्तहारात दें या कोई ऐसा सब्सक्राइब करें, मैं उसका वापस आपको जवाब देता हूँ आसान अंदाज में। ना सिर्फ आसान अंदाज में जवाब देता हूँ, बल्कि बाकायदा खाना खिलाता हूँ, शीट देता हूँ, सर्टिफिकेट देता हूँ। एक तकरीब मुनक़्क़िद होती है, सवेरे मोहतरमा वहाँ आते हैं और वहाँ आपको शीट देते हैं। तो मैं कोई उधार नहीं छोड़ता, इसलिए प्यार करें तो 2 इसम से प्यार लें। मैं तो सिर्फ प्यार का बंदा हूँ, मैं तो खुले दिल का बंदा हूँ। मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा आज तक, नेक नीयत से, सिर्फ घर से, तो मुझे अपने काम से मैं सोचता हूँ तो अपना काम दिन रात में काम कर रहा हूँ। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए ना
अकेला बंदा मसल बंदा काम कर रहा है, अल्लाह की करम है मुझ पे, अल्लाह की दुआ है मुझ पे, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह ऐसे ही मुझे जिंदा रखना है, ऐसे मुझे सेहतमंद रखना, मैं लोगों की खिदमत करता रहूँ। आइए हम पढ़ते हैं पेपर, हम भी जाना दिन में बातें आ जाती हैं, कैमरा लगा तो शब्द दिल करते ऐसे मौलाना साहब या शायर बैठे हों, स्पीकर आगे हो तो चुप नहीं करते, लेकिन ये टीवी चैनल है, मुझे जरा ख्याल करना पड़ेगा। नहीं अब बात करते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं अल्लामा इकबाल की तकरीर की, जो मैंने बात कर रहा था। सफीर मोहतरमा ने अपने बहुत खूबसूरत खिताब फरमाया। उन्होंने इकबाल शख्सियत के बारे में तफसीलन बात की, अपना बचपन के जिक्र भी किया, उसके लगाव का अल्लामा इकबाल का। तो उन्होंने ये कहा कि अल्लामा इकबाल सिर्फ ऐसे शेर शायर नहीं थे, वो एक शायर फलसफी भी थे, कौम को ने बेदार किया, एक आइडिया दिया, जो ख्वाब देखा वो तकमील कायद आज़म ने उसको पूरा कर दिया। तो इस लिहाज से अल्लामा इकबाल की जो भी टच करे किताब, उसमें ऐसी शायरी नहीं है, हर शेर हर किताब का जो उनका कलाम है वो मैंने खेज है और एक आपको लेसन देता है, ये सबको देता है। तो मोहतरमा सफीर मोहतरमा साहबा ने क्या फरमाया, आइए आप सुने। और फिर आगे चारा साहब भी आए थे, उन्होंने भी खिताब बड़ा अच्छा फरमाया, उनका भी खिताब हम बता रहे हैं। फिर डॉक्टर खुरम है, जवान है, उन्होंने भी अच्छा खिताब किया, इंग्लिश में किया, सुगन सूफी साहब ने। और फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई, यानी कि हम एक और क्लिप दिखाएंगे आपको सफी साहबा का, जो उन्होंने खुशी में आखिर में शुक्रिया अदा करती हैं। वो बहुत मसरूर थी क्योंकि तकरीर बड़ी कामयाब थी, बड़ा अच्छा अंदाज उन्होंने पसंद किया। आप देखिएगा, बाद में दिखाऊंगा, 6-7 मिनट की रिपोर्ट है, वो इसके बाद चलेगी। अभी आप ये देखिए, क्योंकि लोग लंबी तकरीरें लंबे प्रोग्राम पसंद नहीं करते। मैं 1.5 घंटे 2 घंटे की रिपोर्ट थी, मैं 2 घंटे रिपोर्ट चला था, किसी ने नहीं देखी थी, ऐसे करते था। तो मैं अब ये 7-8 मिनट जो है 10 मिनट की होगी, आप देख पाएंगे, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन है, मालूमात हैं, ऐसे नहीं है, किसी की तस्वीरें नहीं है। आप देखिए, नॉलेज हासिल कीजिए, और ये आपके लिए एक किस्म का खजाना है अदब का। तो आप देखिए, आइए देखिए क्या तस्वीरें मतलब फरमाती हैं। Who was Iqbal? That you will come to know through the course of this program. But it gives me immense pleasure to welcome you all to this evening as we gather to commemorate Iqbal's birth anniversary. He was the poet philosopher of the East, the visionary who awakened a nation and whose message continues to inspire generations across the world. Born in 1877 and then having dreamt of Pakistan, he was not just merely a poet. He was a thinker, a reformer, and a philosopher whose ideas transcend time, geography, and culture. He dreamed of a society built on justice, dignity, and self-realization, a society where individuals rise through khudi, the discovery of the self, and dedicate that strength to the service of humanity. In his poetry, Iqbal spoke of faith, courage, and creativity. He called upon Muslims to rediscover the spiritual strengths that once made them leaders in knowledge, ethics, and progress. He urged us to reflect, to act, and to never lose hope. For in his words, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है. Elevate your selfhood so high that God himself asks you, what is it that you desire? This message of self-empowerment is not limited to one nation or one era. It resonates deeply with all humanity, especially in today's world, a world seeking moral balance, compassion, and purpose amid unprecedented challenges. It was Iqbal who first articulated the idea that later found political realization through the leadership of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.
As I reflect personally on Iqbal's message, I am reminded how his concept of khudi, the strengthening of the self through faith, discipline, and purpose, has guided my own journey. I can share with you one secret of my childhood. Once I was arranging bookshelf of my father, and I got hold of a book called Bange Dira. I browsed it, and mind you, the verses of Shikwa, Jawabe Shikwa, when I started reciting them, I didn't have to memorize them. And they started to continue opening new vistas of thought in me. And that was a game changer. In the life of a diplomat, one is constantly navigating between identities, responsibilities, and ideals. It is Iqbal's teaching of that selfhood that reminds me to remain rooted in self-awareness and integrity, and to act not out of fear or conformity, but from conviction and purpose. Similarly, Iqbal's symbol of Shaheen, the eagle, has an inspirational power. The Shaheen soars high, unattached to worldly comforts, sustained by vision and strength of character. It is a reminder to rise above mediocrity, to seek excellence, and to serve with courage and dignity, values that have illuminated path of our youth through every phase of life and service. I believe many of us, especially our youth, representative of you sitting here, can find in Iqbal's Shaheen and Khudi a philosophy of empowerment, a way to face challenges with resilience and confidence, both as individuals and as a nation. Today, as we celebrate Iqbal in Oslo, far from our homeland, we are reminded that his message belongs to all Pakistanis in home and abroad, wherever they may be. His poetry unites us from Kharian to Oslo in pride, in reflection, and in purpose. Let us therefore rededicate ourselves to the ideals Iqbal cherished: education, creativity, self-respect, and service to humanity. Let us encourage our youth to read Iqbal, to engage with his thought, to question, to imagine, and to build a better future, not only for Pakistan, but for the world at large. In this beautiful city of Oslo, known for peace, dialogue, and understanding, Iqbal's message of harmony among civilizations feels especially relevant. It is a profound honor to be with you today to reflect on a subject that transcends time and speaks to the very soul of our nation. The relevance of Allama Iqbal's thoughts in the contemporary world. Allama Iqbal was not just a poet, like said a couple of people already, or philosopher. He was the spiritual and intellectual architect of Pakistan. In his historic 1930 Allahabad address, he first articulated the vision of a separate Muslim majority state. Yes, but later on we use the word separate homeland, that was a separate Muslim majority state, a dream that laid the ideological foundation for the Pakistan movement and inspired the Lahore Resolution of 1940. Rooted in the two-nation theory, Iqbal emphasized Muslim nationalism and preservation of distinct religious, cultural, and political identity grounded in Islamic principles. For him, Islam was more than a universal religion.
It was a unifying force that nurtures moral integrity, fosters social harmony, and advances justice and peace globally. His vision inspired leaders like Qaid-e-Azam Muhammad al-Jinnah, who later, because of 1940 Lahore Resolution, laid the foundation of Pakistan and continues to be the ideological cornerstone of Pakistan, emphasizing faith, knowledge, ethical leadership, and the moral and spiritual revival of the Muslim Ummah. In this address, I contend that Iqbal's philosophy offers a transnational framework for confronting contemporary crises of identity, meaning, and spirituality. Through an exploration of his concepts of Khudi, the Muslim nation, and the Ummah, it demonstrates how his vision, rooted in struggle and Ishq divine law, presents a moral and spiritual antidote to modern fragmentation. Iqbal was a philosopher of action. His thought goes far beyond the political. Muhammad Anwar Sufi and other organizers and Professor Shahnawaz Tarat for their generous support and active participation. Pakistan Zindabad. Thank you very much. After this war with India, he was holding a press conference. He quoted Iqbal, and then I understood this guy is a Shaheen of Iqbal. What he said, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, काफिर है तो करता शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेग ही लड़ता है सिपाही। के लिए कहा गया है कि अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब मोहम्मद अनवर सूफी साहब। हमने जब भी देखना है कि हमारे पास क्या है, हमने पीछे मुड़ के देखना है, तो हमें कायद-ए-आज़म और इकबाल नज़र आने चाहिए, और जैसे वो थे वैसे नज़र आने चाहिए। मेरे ख्यालात के मुताबिक नज़र नहीं आने चाहिए, जैसे वो थे वैसे नज़र आने चाहिए। तब मैं कह सकूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरी विरासत कायद-ए-आज़म की विरासत है, मेरी विरासत इकबाल की विरासत है। चाहे आपको समझ आए या ना समझ आए, मुझे समझ आनी चाहिए, और जो मुझे समझ आनी चाहिए वो आपको भी समझ आनी चाहिए।